Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn exercise 12a, page number 305. Question number 5. Statement of the question is: construct an isosceles triangle PQR such that PQ equal to PR equal to 10 centimeter and QR equal to 9 centimeter. Measure and write down the size of QPR. To draw the fair figure given in question number 5, first of all we draw the rough figure with the given all the statements. In the statement it is given that QR is 9 centimeter and PQ is 10 centimeter and PR is 10 centimeter. Now we draw the fair figure. देखिए मैंने कल भी डिस्कस किया था क्वेश्चंस में कि कोई भी फिगर ड्रॉ करने से पहले आपको पेज के टॉप पर रफ फिगर ड्रॉ करना है, राइट टॉप पर, और फिर उसके बाद आपने फेयर फिगर ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ a straight line with the help of scale and pencil 9 centimeter, which is QR. QR is 9 centimeter, right? Now opening the compass to 10 centimeter, we have drawn an arc making Q the center, this arc, and then from R with the same radius, the second arc we have drawn. Where these two arcs cut one another, this is the position for the point P. Now we join PQ and PR. This way PQR is the required triangle, where QR is 9 centimeter, PQ is 10 centimeter and PR is 10 centimeter. This way, now we write down the construction steps for this question. Now the construction steps: using a ruler, draw QR equal to 9 centimeter. Number 2, since P is 10 centimeter away from Q and from R as well, with Q as center and 10 centimeter as radius, draw an arc. Number 3, draw second arc of same radius with R as center, right? ये देखिए इस फिगर पर सबसे पहले हमने QR ड्रॉ किया 9 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास ओपन करके हमने Q को सेंटर बनाकर आर्क ड्रॉ किया और R को सेंटर बनाकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की. Where these arcs cut one another is the position for the point P, right? तो point P ये नजर आ रहा है. Now join P with Q and P with R. Now the fourth step: where these arcs cut one another is the position of point P. Number 5, join PQ and PR. This would be the required triangle PQR. Now the statement of the next question, number 6. Construct an equilateral triangle with sides 9.5 centimeter each. तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए ये देखिए ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. तो पहले हम 9.5 सेंटीमीटर लेंथी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके दोनों पॉइंट्स से हम 9.5 सेंटीमीटर की आर्क्स ड्रॉ करेंगे. जिधर वो आर्क्स कट करेंगी एक दूसरे को, दैट वुड बी द पोजीशन फॉर द थर्ड पॉइंट.
और फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तीसरे पॉइंट के साथ। तो इस तरह हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल जाएगी। ड्रॉ दिस बाय योरसेल्फ। नाउ द सेवंथ क्वेश्चन, construct triangle XYZ such that XY equal to 10.2 centimeter, XYZ equal to 60 degree and YXZ is equal to 45 degree. Measure and write down the length XZ. Right? For the question number 7, first of all we will draw the rough figure at the right top of the page. In this question number 7, first of all we will draw XY 10.2 centimeter. Then at point X we will draw an angle of 45 degree with the help of protractor, right? And at point Y an angle of 60 degree this way. Where these two lines cut one another is the position for the third point Z. This way the triangle XYZ we will obtain, right? And at last measure and write down the length XZ. आखिर में हम ये XZ की लेंथ मेजर करके नोट डाउन करेंगे। First of all we will draw a straight line XY with the help of scale and pencil, 10.5 centimeter lengthy. Then open the compass to we have to draw angles at X 45 degree and at Y 60 degree. So with the help of protractor we draw an angle of 45 degree at point X. तो ये एंगल ड्रॉ करने के लिए हम इस ज़ीरो से काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 45 के लिए 40 और 50 के बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में 45 डिग्री का एंगल होगा। इधर मैंने पॉइंट ड्रॉ किया। अब इस प्रोट्रैक्टर को हटाकर हम x को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करके तो अपवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। दिस वे x को इस पॉइंट से ज्वाइन करके ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। सो दिस वे वी हैव ड्रॉन एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट x। अब पॉइंट y पर इसी तरह से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। नाउ ऑन द पॉइंट y एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट आर्म ये होगा, सेकंड आर्म के लिए हम यहाँ ज़ीरो से काउंट करेंगे, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 जहाँ पर है इधर हमने एक डॉट लगाया। अब y को इस डॉट से ज्वाइन करते हुए हम प्रोड्यूस कर देंगे अपवर्ड। जिधर ये दोनों लाइंस कट करेंगी एक दूसरे को, इट वुड बी द पोजीशन फॉर द पॉइंट C. Now watch, on the point Y we have drawn an angle of 60 degree. तो ये 45 डिग्री हमने ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री हमने ड्रॉ किया। दोनों लाइंस जब हमने ड्रॉ की तो वेयर दे कट वन अनदर इज द पोजीशन फॉर द पॉइंट Z. Now this is XYZ, the required triangle. अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ XZ। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल वी मेजर the length of XZ. We have measured with the help of scale. The length of XZ is 9.1 centimeter, right? Now the construction steps. Using a ruler, draw XY 10.2 centimeter. 2. Since X equal to 45 डिग्री, X पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ये रफ फिगर में भी हमने शो किया था और जब कंस्ट्रक्शन की तो भी X पॉइंट पर हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एंड Y इक्वल टू 60 डिग्री। Watch it here. XY we have drawn 10.2 centimeter at point X
an angle of 45 degree we have drawn, and at point Y we have drawn an angle of 60 degree, right? These lines intersect one another at point Z. This way XYZ triangle हमें हासिल होगी. Then measure XZ, which is 9.1 centimeter lengthy, right? Now the statement of question number 8. Construct triangle ABC such that AB equal to 9.8 centimeter, BC equal to 6.5 centimeter, and ABC equal to 88 degree. Number 1. Measure and write down the length of AC. Number 2. Construct the perpendicular bisector of AB such that it cuts AC. Measure and write down the length of BC such that S is the point where the perpendicular bisector of AB cuts AC, right? This is the rough figure of the question 8. ये देखिए, over here first of all we will draw a straight line AB 9.8 centimeter. उसके बाद हम B पॉइंट पर 88 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. क्लियर? देन BC हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर. सो मेकिंग B द सेंटर, ओपनिंग द कंपास टू 6.5 सेंटीमीटर, वी विल ड्रॉ एन आर्क इस लाइन पर. क्योंकि ये काफ़ी सारी प्रोड्यूस की हुई होगी, इस पर हम इस तरह आर्क ड्रॉ करेंगे. It would be the position for the point C. Then we will join A with C. Clear? We have drawn a straight line AB equal to 9.8 centimeter. Now with the help of protractor we have marked the point for the angle 88 degree. ये देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30 और 90 से सिर्फ 2 डिग्री पीछे. क्लियर? दिस वे at point B we have drawn an angle of 88 degree with the help of protractor. Now opening the compass to 6.5 centimeter, making B the center, we have drawn an arc which cuts the already drawn line at the point C. Now we will join A with C to complete the triangle ABC. In the first part we were supposed to measure AC. So AC we have measured with the help of scale. It came 11.6 centimeter. Now in part B we have to draw, in second part we have to construct the perpendicular bisector of AB. इस AB का perpendicular bisector हमें draw करना है. So we will open the compass a bit more than 9.8 centimeter, a bit more than 9.8 centimeter, and making B the center, we will draw an arc up and down the line. In the same way, making A the center, we will draw the other arc up and down the line. Where these arcs intersect one another, we will join these 2 points for the perpendicular bisector required. This way we have drawn the arcs from A, these 2 arcs, and from B, these 2 arcs. These arcs cut one another at this point and this point. We will join these 2 points. It would be the perpendicular bisector required. Now we join these 2 points of intersection, जिनके names मैंने दिए M, N. इन 2 points को join करते हुए मैंने ऊपर produce कर दिया. This line cuts, जो perpendicular bisector है, it cuts the already drawn line AC. कहाँ पर? At the point S. Clear? अच्छा, अब हमें measure करना है BS.
तो B का डिस्टेंस S से, इसे हम डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देंगे और इसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, राइट। नाउ वी मेजर BS हमने डॉटेड में ड्रॉ कर दिया एंड वी हैव मेजर्ड इट विद द हेल्प ऑफ स्केल. It is 5.9 centimeter. 5.9 centimeter. This way the construction is complete. Now we'll write down the construction steps. Now the construction steps for the triangle ABC, what we have drawn. First of all, draw a line segment AB 9.8 centimeter, right? Then second, draw angle B 88 degree with the help of protractor. You know how we have drawn the angle at a particular point in the previous questions. Now 3. Since C is 6.5 centimeter away from B, with B as center, draw an arc which cuts the second arm at point C. Now watch it here. ये देखिए, this was AB, we have drawn 9.8 centimeter. फिर B पॉइंट पर हमने 88 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. फिर हमने कंपास को ओपन किया 6.5 सेंटीमीटर रेडियस पर और B को सेंटर बनाते हुए आर्क ड्रॉ की विच कट्स दिस सेकेंड आर्म ऑफ दिस एंगल, क्योंकि ये फर्स्ट आर्म था, ये सेकेंड आर्म को कट किया इस आर्क ने एट द पॉइंट C. उसके बाद हमने A को C से ज्वाइन कर दिया. क्लियर? ज्वाइनिंग A with C. नाउ दिस वाज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. अच्छा, पार्ट 1 में है मेजर AC. तो जब हमने AC को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्केल, इट केम 11.6 सेंटीमीटर इन लेंथ. उसके बाद सेकंड पार्ट था कि हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो AB पर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, क्योंकि हमने A से आर्क लगाई, ये अप द लाइन एंड डाउन द लाइन 9.8 सेंटीमीटर से थोड़ा सा के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करके, ठीक है. इसी तरह B को सेंटर बनाकर उसी रेडियस की एक और आर्क ऊपर और नीचे लगाई. इधर पेयर ऑफ आर्क्स ने कट किया M पॉइंट पर और इधर इन पेयर ऑफ आर्क्स ने कट किया एट पॉइंट N. वी हैव जॉइंड दीज 2 पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस्ड अप टू AC. AC को उसने कट किया S पॉइंट पर, राइट. उसके बाद हमने BS की मेजरमेंट करना थी विच केम 5.9 सेंटीमीटर. नाउ वॉच हाउ इट रिफ्लेक्ट्स इन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. इट कट्स AC at S. Measure the line segment BS which is 5.9 centimeter. Right? Now question number 9. Statement of the question is, construct the triangle ABC such that AB equal to 9.4 centimeter, AC equal to 8.8 centimeter and ABC angle is 60 degree. Then part 1, measure and write down the size of the angle facing the shortest side. Second part, construct the angle bisector of the angle BAC such that it cuts BC. Measure and write down the length of CS such that S is the point where the angle bisector of BAC cuts BC. Now we solve it. Before the fair construction, we draw the rough figure. Rough figure is a road map for our construction. ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले हम AB ड्रॉ करेंगे 9.4 सेंटीमीटर, फिर पॉइंट B पर एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर.
देन कंपास को ओपन करेंगे 8.8 सेंटीमीटर, मेकिंग ए द सेंटर। हमने एक आर्क लगानी है, वो आर्क कट करेगी दूसरे आर्म को। ये पहला आर्म था, ये दूसरा आर्म इस एंगल का, तो इसको कट करेगी इस पॉइंट पर, चूँकि लोकेशन बनेगी पॉइंट सी की। देन वी विल जॉइन ए विद सी। तो इस तरह से हमें ट्राइंगल हासिल हो जाएगी ABC, राइट। This way we have drawn a line segment AB of 9.4 centimeter. अब पॉइंट B पर हम एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ पर जिधर 60, ये देखिए 0, 10, 20 यहाँ से काउंट करना है, और ये 60 इधर पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ B joining with this point we will draw an arc. This is an angle of 60 degree. As AC is 8.8 centimeter, so we have opened the compass to 8.8 centimeter, making A the center. We have drawn an arc. अच्छा, उस आर्क ने कट किया इस सेकंड आर्म को C पॉइंट पर और C डैश पर, दो जगह कट किया। क्लियर? Now we join A with C. This way the triangle ABC is obtained. Afterwards we have to solve part 1, where we have to measure and write down the size of the angle facing the shortest side. The shortest side of this triangle ABC is BC. BC है 7.9 सेंटीमीटर। सो इसके सामने का जो ये एंगल है, इसकी हम मेजरमेंट करेंगे। When we measure it with the help of protractor, it is 52 degree. This angle is measured as 52 degree. अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट हमने ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A। ये इसका हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो opening the compass to a suitable radius, making A the center, we will draw an arc. Opening the compass to a suitable radius, taking A as the center, we have drawn an arc which cuts AC at point M and AB at point N. Now taking M as center, I have drawn an arc, and making N a center, I have drawn another arc. Where these two arcs cut one another, this point is joined with A and produced this way, cutting BC at this point, right? Now this angle bisector cuts BC at point S. Then we have to find out the length of CS. हम ये फाइंड आउट करते हैं with the help of scale. This CS is equal to 3.9 centimeter. Now the construction steps. Draw AB equal to 9.4 centimeter using a ruler. Number 2, draw ABC equal to 60 degree using protractor. Number 3, open the compasses to radius 8.8 centimeter. Draw an arc making A the center. Open the compasses to radius 8.8 centimeter. Draw an arc making A the center. Then join A with C. Then part 1, angle facing the shortest side, वो एंगल हमारे पास हासिल हुआ था BAC, that was 52 डिग्री, राइट। उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमें ड्रॉ करना है एंगल बाइसेक्टर। ये देखिए यहाँ पर जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये BAC जो ये एंगल है, इस पर एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया।
and this line, when we have produced, it cuts BC at the point S. Clear? Now in the second part, draw the angle bisector of BAC. और इसमें हमने मेजर करना था CS को, so measured CS is equal to 3.9 centimeter. Now question number 10. Statement of the question is, construct the triangle PQR such that PQ is 9.5 centimeter, PR is 8.5 centimeter and QR is 9.8 centimeter. Number 1. Measure and write down the size of the angle facing the shortest side. Number 2. Construct the perpendicular bisector of QR such that it cuts PQ. Measure and write down the length of QT such that T is the point where the perpendicular bisector of QR cuts PQ. Right? Before drawing the fair figure, we have drawn the rough figure, which gives us an idea how to draw the fair figure. First of all, we will draw PQ 9.5 centimeter. Then open the compass to 8.5 centimeter, making P the center. We will draw an arc. Then opening the compass to 9.8 centimeter, making Q the center, we will draw another arc. These two arcs will cut one another at the point R. This way we will join P with R and Q with R to have the required triangle PQR. Now the fair working we do. This way we have drawn a straight line of PQ 9.5 centimeter with the help of the scale. Now opening the compass to 8.5 centimeter, making P the center, we have drawn an arc. This arc we have drawn. Now making Q the center and opening the compass to 9.8 centimeter, we will draw the other arc. This would cut the first one arc. This way the two arcs cut one another at the position R. Now we will join P with R and Q with R to have the triangle PQR. This way we have drawn an arc, we have drawn a triangle PQR where PQ is 9.5, PR is 8.5 and QR is 9.8 centimeters. Now in part 1, in first part we are supposed to measure the size of the angle facing the shortest side. ये देखिए ये तीन साइड्स हैं, इनमें जो शॉर्टेस्ट साइड है दैट इज दिस वन, सो उसको फेस करने वाला एंगल बन रहा है एट द पॉइंट Q. नाउ वी मेजर this angle with the help of protractor. It is an angle of 52 degree. Now in part 2 we have to draw the perpendicular bisector of this side QR. So now opening the compass a bit more than half of 9.8 centimeter, making Q the center, we will draw two arcs. This way two arcs we have drawn up and down the line. Now with the same radius we will draw the arcs from point R. Now M and N are the points of intersection of these arcs. This perpendicular bisector touches the side PQ at the point T. Now we have to find out the measurement of TQ with the help of scale, right? This way we have drawn the angle, the perpendicular bisector on QR
and this cuts PQ at the point T. Now we measured QT. This measurement is 7.5 centimeter, right? Now the construction steps. Number 1, draw PQ equal to 9.5 centimeter using ruler. Number 2, making P the center, draw an arc of radius 8.5 centimeter. 3, making Q the center, draw an arc of radius 9.8 centimeter. 4, these arcs cut one another at point R. 5, join P and Q with R respectively. अब इस तरह से हमें ट्राइंगल PQR हासिल होगी. नाउ पार्ट 1 में है एंगल फेसिंग द शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट साइड है PQ. सो PQ के सामने जो एंगल बनता है दैट इज PQR. सो PR इज द शॉर्टेस्ट साइड और उसके सामने जो एंगल बनता है दैट इज PQR. इट इज 52 डिग्री. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देखिए सेकेंड पार्ट में हमें करना था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QR पर ड्रॉ करना था. तो कंस्ट्रक्टेड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ QR. इट कट्स PQ एट T. और फिर QT की हमें मेजरमेंट करना थी. सो मेजर्ड QT इक्वल टू 7.5 centimeter. Now the statement of question number 11. Construct a triangle PQR such that PQ is equal to 8.8 centimeter, PR is 9.2 centimeter and QR equal to 10.4 centimeter. Now part 1. Measure and write down the size of the angle facing the longest side. पहले हम करते रहे थे facing the shortest side. अब facing the longest side जो एंगल है उसकी मेजरमेंट आपने करना है. Then second part, construct the angle bisector of PQR such that it cuts PR. Measure and write down the length of PT such that T is the point where the angle bisector of PQR cuts PR. इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपने पहले ना किया हो पिछले सम्स में. सो आई एम श्योर यू आर एबल टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन. ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.